negative kind, feminine negative kine, plural negative kine. Okay, so negative article, this is called negative article, like masculine der, negative kind, neutral das, negative kind, nominative case, feminine die, negative kine, and plural die, negative kine. Clear? Actually this is indefinite, I have to write here indefinite instead of definite, so I have exchanged. Okay, I will write here once again, der, das, die, and this is plural die. This is definite, bestimmter, and here I write unbestimmt ein, neutral ein, feminine eine, and plural no indefinite. So I write dash, plural no indefinite article, no ein eine, plural. Clear? Clear? Yes, sir. Now indefinite, accusative case, accusative, masculine einen, neutral ein, feminine eine, plural dash, nothing. So then we see definite, masculine einen, masculine den, definite, definite means die, der, das, den, neutral das, feminine die, and plural die. Now you can compare nominative and accusative. First definite article, what are the changes? With masculine especially, there is only one change with masculine, der, nominative, accusative den. Similarly, indefinite, same change with masculine, indefinite ein, okay, accusative einen. Is that clear? Yes, sir. Negative now, negative accusative, so masculine keinen, right, einen, keinen, you can compare with indefinite. So neutral kein, feminine keine, plural keine, okay, there is negative with plural, okay, keine. Clear? Now we fill up these blanks below, nominative or accusative. We have to fill up the blanks here. First, möchtest du, möchtest du, Keine. eine Cola, do you want a cola? Eine Cola. Wo ist Buch, wo ist das Buch? Where is the book? Eins, Ich habe das Buch. Third, ich habe Ein Sohn und eine Tochter. einen, Ein Sohn. einen, accusative, ich und Sohn, subject plus object, subject plus object. Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट है तो मुझे बताओगे? क्लियर है? Yes, sir. Subject plus Yes, object. sir. और वैसे भी हावन वर्ब आपको पता है ना? क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, wir haben Milch. तो नेगेटिव के मीन्स नेगेटिव के, keine, के इज ऑलरेडी, so keine. Hast du Kugelschreiber means pen, ball pen. Dabei means with you. Do you have a pen with you? Hast du einen, accusative होता है, ठीक है? Dare. यहाँ पे देखो आर्टिकल लिखे राइट साइड में, देख रहे हो? राइट साइड में आर्टिकल, यहाँ से चेक कर सकते हो. इस दास
ये पॉजेसिव है, अभी छोड़ेंगे इसको, पॉजेसिव नहीं। इस नेम एप्पल कुकन, एप्पल केक, चेक आर्टिकल एंड टेल मी। आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम, ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम है, पूरा करना है 18 तक। आर्टिकल यहाँ पे लिखे है, जल्दी से आंसर लिखोगे फिर मैं पूछूंगा 5 मिनट्स के बाद।